Narendra Modi's ABCD jibe has triggered a fresh political slugfest between the Congress now and the BJP. From top of the alphabet down to the very last, both parties fighting each other tooth and nail, matching the jibes word for word. Now the alphabet wars then translating into a new holds-barred clash between Rahul's Congress and Narendra Modi's BJP. Allegations, counter-allegations, attacks, counter-attacks. An aggression met with equal ferocity. From the time they sounded the poll bugle, both Congress and BJP have been hammer and tongs at each other. And now Narendra Modi's ABCD jibe triggering a fresh political fight. A for Adarsh Gotala, B for Bofors Gotala, C for Koila Gotala. Like A for Ahankar, B for brash, C for communal, D for dictatorial, and I could add M for megalomaniac. TMC also jumping into the alphabet wars. BJP not wanting to be left behind, striking back with equal force, targeting Rahul Gandhi and accusing the Congress of suffering from the Modi mania. आप मोदी मीनिया हो गया, आपको हर दिन जो है वो मोदी जी पर बोलना है कि वहां पर इतने मंत्री ऐसे हैं तो इतने मंत्री खराब है, वहां गरीबी है, वहां अमीरी है। अरे भैया, ये सारे पिटे पिटाए फार्मूले, ये सारे जितने भी आप भाषण आप लोकसभा के चुनाव में कर रहे हैं, ये सब आप गुजरात के विधानसभा के चुनाव में कर चुके हैं. They may have sparked the war of words at the battle of rallies. पार्लियामेंट में मिर्ची झोंकने का काम शुरू कर दिया है. वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ा के, कटवा के राजनीति करते हैं, खून की राजनीति करते हैं. ये वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिसता था और रुपया 15 पैसे में पलट जाता था. इनको गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, सिर्फ सत्ता दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखता है. But now it's no longer a Modi versus Rahul war. Both parties unwilling to relent, hitting back at each other at every given opportunity. And this is just a precursor to the big clash that awaits in the next few weeks. Bureau Report, Times Now.